Recode का hyaluronic acid mist gives you a radiance glow on your skin. Hold it 6 to 7 inches away from your face and spray it very sparingly. बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं हाउ टू यूज अ ग्रिप प्राइमर, मेकअप से पहले या मेकअप के बाद। अगर आप मेकअप से पहले इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो मेक श्योर दैट जस्ट टेक अ 2 ड्रॉप ऑफ ग्रिप प्राइमर्स ऑल ओवर योर फेस और इसको आपको ऑलमोस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है सो दैट इट गोज एंड सेट इनसाइड योर पोर्स और एक आपके बेस को अच्छी सी ग्रिपिंग देगा। मेक श्योर दैट आपको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है एंड बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर फेस आपका ग्रिप प्राइमर 100% ड्राई होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये स्किन के ऊपर एक अच्छी सी फिल्म क्रिएट करता है। सो इट वर्क एज अ बैरियर। मेक श्योर आपका ग्रिप प्राइमर अच्छी तरह से ड्राई हो, उसका जो चिपचिपापन हो कंप्लीटली निकल जाना चाहिए। Record's Ace of Base, one of the most trending favorite product in the market, Record's Ace of Base. Basically ये blurring primer है, pore minimizer है. You can use it to smooth on your fine lines. Base को grip करने के लिए, blurring के लिए, अगर आपको base को बहुत long lasting करना है उसके लिए this is one of the most favorite base that is primer from almost every makeup artist. आप देख सकते हो मैंने इसको कितना कंज्यूम किया है एंड द सेकेंड वन इज ऑलरेडी रेडी। सो आप सोच सकते हो इसका कंजम्पशन कितना है एंड सिंस इट इज हाईली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, प्राइस मैटर्स। इसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, इट इज़ वेरी वेरी रीजनेबल, सिर्फ 800 रुपये में मिलता है एंड प्लस यू गेट सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट महीने का। सो टेक दिस क्वांटिटी and now just apply all over face. Normally I prefer primers, toners, moisturizers, ये सारे मैं हाथ से लगाना प्रेफर करती हूँ when are you doing self makeup and if you're doing on a client, if your clients are okay you can use your finger, but अगर clients हमारे ready नहीं है तो definitely you can use brushes, but I personally prefer fingers gives you a very better grip and better application compared to brushes and same time ये जो product होते हैं absorb by your brushes absorb कर लेते हैं तो बहुत बार उसके जो active ingredients है वो absorb brushes अगर आपके synthetic नहीं आपके रेमी है तो absorb कर लेंगे, so that product will not serve the purpose. So मैं most of the makeup artists को कहूँगी कि you can apply your fingers to use primers. कौन नहीं चाहता स्किन के ऊपर रेडियंस ग्लो आ जाए? क्या आप रेडियंस ग्लो के लिए देख रहे हो? सो यू हैव अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रोब क्रीम फ्रॉम रिकॉर्ड। जी हाँ, रिकॉर्ड का स्ट्रोब क्रीम सिर्फ 600 रुपये में आता है एंड इट गिव्स अ लूमिनस शाइन। इसको आपको थोड़ी क्वांटिटी लेनी है एंड आपको इसको लगाना है माउंटेन्स ऑफ द फेस। माउंटेन्स ऑफ द फेस मतलब कहाँ पे? नोज के टिप के ऊपर, चिकगम बेबन के ऊपर, फोरहेड के माउंटेन्स के ऊपर, ब्रो बोन्स के ऊपर, क्यूपिड्स के ऊपर, चिन के ऊपर, नोज ब्रिज के ऊपर एंड ना जस्ट ब्लेंड दिस एंड जस्ट टैप इट एंड आप देख सकते हो a radiance shine comes on your skin. You can use it directly डे टू डे वेयर के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इसको आपके फाउंडेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप अगर आपके पास हेवी कवरेज फाउंडेशन जो थिक फाउंडेशन हो यू कैन ऐड दैट एंड मेक इट लूमिनस फाउंडेशन। यानी अगर आपके मैट को लूमिनस करना है सो यू हैव अ वंडरफुल प्रोडक्ट विथ यू। स्टबर्न डार्क सर्कल्स, you have a corrector from Ricoh's HD concealers. So I'm taking this orange concealer and just applying below my dark circles. ये बेसिकली हेवी कवरेज होने के कारण डेफिनेटली आंखों के नीचे के जो डार्क सर्कल्स है, डार्क ब्लू पिगमेंट्स है, उसको ये करेक्ट कर देगा एंड यू आर instantly free from stubborn dark circles. So my stubborn dark circles has been taken care of Ace of Base HD concealer palette, that is a high coverage concealer palette only from Ricoh. Ace of Base concealer I'm using for neutralization. यहाँ पे आप 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर ले सकते हो. For my neutralization I normally use 5 number. Now it's time for foundation. I'm using
Recodes number 5, that is the shade number, I think sorry, the shade number 6 Calcutta, which exactly suiting my tone. That is I am into neutral warm colors, so ये मैं कलर इस्तेमाल करूँगी मेरे पूरे फेस के ऊपर एज अ बेस की तरह. Who don't like pinky chicks? Recode's cream blusher, that is called mousse blusher, solve all your worries as far as blushes are concerned. Need textures, help us to apply the product very easily, and it is super buildable. So I'm taking a some amount of quantity and you can see how smoothly it build up and gives that seamless natural blush effect. I'm using the shade number 3, which is called as Full of Stroke. To set my foundation, I'm using Recode Compact. The shade number is 4 and 3. I'm mixing these two shades together and just going to set my foundation. Glow Mist to set your base and give a luminous shine. Recode blush palette. It has total 6 shades. तो इसमें से मैं ये कोरल पीच कलर इस्तेमाल कर रही हूँ. बहुत कम क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है क्योंकि ऑलरेडी हमने नीचे की तरफ To define my eyebrows, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ V-Store The Shoe Recode का brown color liner, that is called a coffee brown liner, as my eyebrow definer. ये cream base है. I am going to define my eyebrows. So you can see the difference in my both the eyebrows.